Hi guys, welcome back to class of learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. Today we're going to work out Toru Datta Sita. So Toru Datta Sita. It's all about poetry. No, it's all about the life of Sita. So Sita, the word as Sita, we've been talking about Sita from Ramayana. Sir, क्या उनकी poetry है? How are we going to work on this poetry? In that sense, no, we're not going to really read that particular poetry that is being given on the board. उसको हम पढ़ने का तरीका बताएंगे. तोरू दत्ता ने क्या हाईलाइट किया है आप देखते हो इसमें मैंने कुछ पार्ट को स्किप किया ताकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर पाऊं कि कुछ चीजें स्किप करके समझा सकती हैं such as the description of the forest is not there in the board आपने का description of forest that is really important तो किन पॉइंट वाइज को हाईलाइट किया गया किन चीजों को बताया गया और सीता के थ्रू व्हाट रियली तोरू दत्ता हैज ट्राइड टू सर मैग्नीफाई नॉट सिग्निफाई चीजों को समझना जरूरी है फाइंड सीता दैट इज रियली इंपॉर्टेंट from the different perspectives. The first thing we need to clear it is from the different perspective of a mother who was telling a story to her kids. सर एक दो नहीं तीन बच्चे हैं जिनको कहानी सुना रही किसकी कहानी सुना रही सर सीता की स्टोरी सुना रही और सीता की स्टोरी में है क्या and how she was being indulged in that really story at the time when she was telling she was crying and not only she was crying along with her the three kids स्टार्ट क्राइम और वो चाहते हैं भूल जाएं बट वो भूलेंगे नहीं डेफिनेटली उनको याद रहेगी पोएट्री हमेशा इसको समझना जरूरी है कि किस तरह तोरू दत्ता ने इसको प्रेजेंट किया एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू लर्न दिस पोएट्री वो पेपर में अगर याद हो तो हम इसको कैसे ऑन टिप क्लियर करेंगे लेट्स स्टार्ट विद क्लास फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग अबाउट सीता इज बट हु इज शी फेयर लेडी बट हु इज शी फेयर लेडी द फर्स्ट लाइन वी स्टार्ट द क्वेश्चन Not in a vein she weeps, follow at every tear she sheds. Tear from the three pairs of young eyes fall amain. I repeat, the three pairs of the young eyes. It's all about the three kids. Who was she who was telling the story? The mother of these kids. She was the mother of these kids who was telling the story of Sita. The word I said Sita to her kids. And born in a sorrow are the three young heads. हाँ वो भी साथ में बोल रहे हैं. They'll be crying. Crying because सबके सब इतने indulge हो चुके हैं स्टोरी में that they can feel the pain. Can you feel the pain of somebody who has been passed out many years ago? But when you just really put your feet in their shoes, you can feel that pain. And then we are having it's an old story. Yes, it was an old story. ये highlight करते हैं बहुत पुरानी बात है. It's an old story, and the lady which was reports at Sita from the past is by a mother's song. So yeah, it's a mother. Mother can feel it. A mother can feel it because it's a story of a pregnant woman who was being abandoned by her own husband at the time when she was pregnant, and she gave birth to the two boys. And lives really along with that boys in the forest. And the forest को highlight करेंगे ऐसा फॉरेस्ट सूरज की रोशनी तक नहीं आती. It was something that we have to feel it. मैंने आपको in the beginning of the point बताया था कि guys मैंने वो पार्ट स्किप कर दिए जहाँ description of forest से तो उसको हमें क्लियर करना है क्या क्या चीजें बताइए किस तरह फील करते हैं how we going to adjust ourselves with this particular poetry Sita. And then here we are having this husband at last and melts the picture from this sight away. Yet shall they dream and until the day. अब स्टोरी सुना चुकी है वो जानते कि बच्चा उसको भूलने वाला नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करेगी कि भूल जाए. She was hugging her kids really ताकि वो उसके साथ मिले और पूरी तरह भूल जाए लेकिन वो भूलने वाला नहीं है. Is that the woman was being connected with Sita somewhere? क्या वो अपनी लाइफ में उस चीज को लेके आने की कोशिश करिए कुछ डिफाइन करने की कोशिश करिए दैट इज ऑल अबाउट द इनर मीनिंग ऑफ दिस पोएट्री. तो द प्रेजेंट इज अ ग्रेट पार्ट व्हाइल डिलीवरिंग दिस पोएट्री. इसको थोड़ा इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं. तो गाइस ये वाला पार्ट तो आपने क्लियर कर लिया ये तो टेस्ट जो पेपर में आने वाला है. ओके सर व्हाई डिड यू स्किप दैट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट वाला पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफाइड नहीं है इसलिए मैंने आपको मेन पार्ट बताया. तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस देन आई मूव टू द अदर पार्ट जो आपके लिए की टर्म काम करने वाला है. लेट्स डिस्कस दिस हियर
एज अ टोल्ड यू अर्लियर कि हर पोएट्री में मैं आपको एक पार्ट दे दूंगा जिसको आप रीड करने से सारी की सारी पोएट्री कॉन्टेक्ट कर लेंगे। Here it begins. It's a poem about a woman who was abandoned by her husband in the forest when she was pregnant. So, sir, this is all about Sita. Yes, this is all about Sita. कि पोएट्री सीता के बारे में। तो आपने सर सीता सर प्लीज टेल गॉडेस सीता या इट्स फ्रॉम रामायण। तो सर यहाँ हमें पहले ये देना है इट्स अ पोएम अबाउट अ वुमन हु वाज अबैंडन्ड बाय हर हस्बैंड in the forest when she was pregnant. Okay, then we need to describe that she gave birth to the two boys and lives in a forest along with them and really feel all that toughs that was come in all the hurdles that come on that way. वो सब तो explain कर सकते हैं। Then we come to next part. कुछ दो तीन चीजें important है जैसे कि Toru has provided many images from the forest. सर वो सारी images हमें बतानी जिसमें हमें बताना है ऐसा forest जहाँ सूरज की रोशनी आती। There are lots of turfs and hurdles in that particular forest जहाँ रहना आसान नहीं था। No one can live at that situations. फिर भी goddess सीता वहाँ अपने बच्चों के साथ रही। Then we have the tale of the story. This is really important. The tale of the story is a woman, mother, putting her three children on the bed and telling them a story about Sita. अब वो स्टोरी किस फॉर्म में बताई उसने? शी नरेटेड द स्टोरी। सर उसको वो रियलिस्टिक टर्म्स में हाईलाइट किया गया। आपने ना स्टोरी को बताने का तरीका इन अ रियलिस्टिक फॉर्म अलोंग विद दैट कि वो आप ग्रैब कर पाते हैं, आप समझ पाते हैं एक्चुअली क्या हो रहा है, हाउ थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग, किन चीजों को हाईलाइट किया गया, किन को बताया गया अच्छे से, वो सब हमें याद रखना है। एंड देन वी कम टू द लास्ट फेज। तो द शोज मदर कनेक्शन टू सीता's अनहैप्पी लाइफ। सर ये पार्ट प्लीज इसको हाईलाइट करेंगे आप। So the shows connection to Sita's unhappy life, the mother's connection to the Sita's unhappy life। अब वो कितनी हैप्पी थी या कितनी नहीं थी वो यहाँ बताना है। तो गाइस दिस इज amongst the other poetries जो आपको बोला था कि MD7 का एग्जाम है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पोएट्रीज में लेके आऊंगा आपके लिए। तो ये नेक्स्ट एडिशन था सीता का। वेट करते हैं अगली के लिए। तब तक चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच फॉर फाइल ओवर। ऑल द बेस्ट गाइस।